It's an honor from a girl coming from South to be playing a Maharani. Esubai is the most privileged and the most special thing that I could ask for in this lifetime. And I was just telling Lakshman sir, I feel like after this, I'm happy enough to retire. I just surrendered because I didn't know, like Vicky said, you don't have a reference, right? You're like, it's a story, you know their story, and there's such majestical, impactful characters, personalities. How do you play them? It's, I think for me specifically, I just surrendered, dived into what Lakshman sir wanted. There was, of course, a lot of rehearsals and practice in terms of language and everything. But it's just the trust you have on the team because you know that if someone has to pull this off, you just should not have any sort of barriers of yourself. You just have to come here and say, sir, I am all in. Whatever you ask for, I'm here to deliver. And that's what you're seeing on screen today. इससे पहले मैंने सैम बहादुर ख़त्म की थी एंड देन आई टुक अ 7 month break to prep for this film, to gain some weight, beard, hair, everything, action training, sword fighting, horse riding, everything. But important thing was to get the spirit of Chhatrapati Sambhaji Maharaj, and उसके लिए I would just keep looking to Lakshman sir. एक और चीज़ बहुत हेल्प करती थी कि लक्ष्मण सर, since the day that we have started discussing Chhawa, he's called me, he's only said Raze to me. He's never called me by my name. फोन पे हो या इन पर्सन हो या शूट हो, वो आज तक वो मुझे राजे ही बुलाते हैं. एंड आई डोंट नो, वो एक जब आपके डायरेक्टर आप में इतना कॉन्फिडेंस फूंक देते हैं ना, वो आप खुद वैसे देखने लग जाते हो खुद को. एंड आई ओनली हैव लक्ष्मण सर टू थैंक फॉर दैट. जब हम तैयारी शुरू कर रहे थे छावा की, मैं लक्ष्मण सर से रोज मिलता था. हम स्क्रिप्ट पे बैठते थे, हिस्ट्री पे बैठते थे, सारी रिसर्च करते थे. मेरे पास बहुत सवाल होते थे कि अच्छा फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था. बट इवेंचुअली आफ्टर नोइंग ऑल द हिस्ट्री, आफ्टर नोइंग ऑल द रिसर्च, मैंने सर से ये पूछा था कि सर मैं तैयारी क्या करूं, कैसे प्ले करूं, मुझे कुछ तो बताओ मैं क्या करूं. एंड ही जस्ट गिव मी वन ब्रीफ थ्रू आउट द शूट. ही सेड, विकी मुझे शेर चाहिए. एंड दैट्स ऑल ही सेड. वो चले तो शेर, वो दहाड़े तो शेर, वो लड़े तो शेर, वो चुप तो शेर, वो नाचे तो शेर. वो शेर है. एंड दैट्स ऑल ही सेड टू मी कि और कुछ मत सोचना. In every cell of your body you should feel like a lion. And I really hope and pray that जब लोग 14 फरवरी को फिल्म देखें, they feel that.